नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? वी आर हैदराबाद बॉयज, वेयर वी टॉक ऑल थिंग्स क्रिकेट। हमारे साथ हैं सौरभ। Namaste, good morning, good afternoon, good evening, everyone. लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का एजेंडा थोड़ा पैक्ड है Yeah. और हम थोड़ा वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट रखना चाहते हैं। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद कल आज वैसे आज रात को आज इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई होने वाला है। फर्स्ट ओडीआई इंडिया वन दिस एट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, 5 विकेट एट वानखड़े। सेकंड ओडीआई होने वाला है वाइजैक में। थोड़ा हमने प्रीव्यू ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर लिया था, सो चेक दैट वीडियो इन आवर डिस्क्रिप्शन एज वेल। बट लेट्स जस्ट कट स्टार्टेड विद क्या लगता है टीम न्यूज और टीम लाइनअप फॉर दिस गेम ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सौरभ? I think India may go unchanged. में इंडिया चाहेगी शायद एक रोहित बार। शर्मा आ जाएंगे? हाँ, तो वो एक चेंज, वो तो एक फोर्स्ड चेंज होने वाला है। अनफोर्स्ड चेंज, हाँ अनफोर्स्ड चेंज होगा। सो आई थिंक गिल और रोहित शर्मा ओपन ओपन। करेंगे। कोहली, सूर्य कोहली विल कुमार बी 3। यादव, या केएल कोहली विल बी राहुल। थ्री। के राहुल अब कम से कम 10-15 मैचेस अपने पक्के कर लिए उन्होंने। ऑल जोक्स असाइड, ही प्लेड वेल दो। हाँ हार्दिक मतलब पांड्या। हाँ मतलब या और हाँ, विकेट कीपिंग भी उन्होंने हाँ, करी थी, तो मतलब तगड़ा कंपटीशन हाँ, है एंड ही ईशान डिड किशन वेल, का। एंड ही डिड करेक्ट, ही वेल। डिड आई मीन, वेल विद अगर द लोगों को सीनियर याद बॉल। हो कि स्मिथ का कैच, बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लिया था। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आई थिंक शार्दुल ठाकुर आई विल थिंक बी गिवन बाकी देयर अनचेंज्ड अपॉर्चुनिटीज। होगा, तो मुझे लग मुझे रहा है पता नहीं, ईशान एक किशन कुड लगता बी है, आउट हाँ और रोहित मुझे शर्मा लगता विल है टेक ओवर। ईशान किशन कैन बी आउट। और मुझे लग रहा है कि शायद उमरान मलिक को एक अपॉर्चुनिटी मिले। अब किसकी जगह मिले, आई डू नॉट नो दैट। आई थिंक इट, मुझे लगता मुझे नहीं है कि लगता ये है। सेकंड मैच में ना दे, शायद थर्ड मैच में दे। शमी और सिराज ने हम्म, बहुत अच्छा काम किया है, आई थिंक। अगर ऑप्शन मिला तो उनको, अगर उमरान शार्दुल ठाकुर को निकाल के उमरान मलिक रख सकते हैं। दैट्स मे बी द ओनली पॉसिबिलिटी आई कैन नहीं, थिंक ऑफ। Otherwise, this everyone else gets auto selected. या So yeah, I think Rohit आई Sharma is थिंक, back. I think that's a big plus for India. Makes them या super favorites. राइट, सुपर फेवरेट्स। अब तो बोलना ही Bad luck पड़ेगा to, क्योंकि yeah, अब तो द बोलना ही पड़ेगा, या and bad luck to हाँ, Ishan Kishan. I think, yeah, I mean, if he had done well, maybe he had a chance. But yeah, I think now I राइट, feel राइट। Rohit Sharma will take over and KL Rahul will be playing the wickets. ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। They had a shocker, मेरे हिसाब They से। had a shocker. They had a shocker, or you will be seeing quite a number of changes. I think yes. I think in the last match, थोड़े forced changes हो गए थे उनके। David Warner and Alex Carey, they were मुझे not लगता well. नहीं है कि तो डेविड वार्नर इज स्टिल बैक। एलेक्स कैरी कुड बी बैक, एंड आई थिंक एलेक्स कैरी विल स्ट्रेट अवे गेट इन प्लेस ऑफ जॉस इंग्लिश। तो दैट आई थिंक वुड हैपन मोर और लेस। मुझे लग रहा हम्म, है कि वो हो जाएगा। हाँ, मुझे हाँ, नहीं लगता हाँ, कि और कोई हाँ। चेंजेस कर पाएंगे। आई मीन, आई थिंक दे हैव अ पॉजिटिव कि मैक्सवेल खेल पाए। नो, स्टॉइनस डिड हिज जॉब वेल। ठीक है, बैटिंग में उन्होंने नहीं करा, बॉलिंग कर लिया। मिचेल मार्श वाज अ बिग पॉजिटिव फॉर देम। और हम्म, क्या कर सकते हैं हम्म। चेंजेस? शॉन अबर्ट ने अपना काम किया है। क्या लगा और क्या चेंजेस हो सकते हैं इस ग्रुप में? डेविड वार्नर मुझे लगता नहीं है, तो मुझे सिर्फ एलेक्स कैरी आएंगे लग रहा है। आई थिंक, मुझे पता नहीं, अगर अगर डेविड वार्नर कल फिट होते हैं तो मुझे लग रहा है मारिस लाबुशेन नहीं खेलेंगे कल। तो मुझे लग रहा है कि वार्नर, हेड, मिचेल मार्श, स्मिथ, कैरी, कैरी, ग्रीन, कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल, मैक्सवेल, स्टोइनिस, स्टॉइनस, एबट, स्टार्क एंड स्टार्क, जैम्पा। जैम्पा, So जैम्पा, essentially that मुझे लग Marnus रहा है। Labuschagne versus David Warner for that spot if David Warner picks him. Because I think Marsh ने अपना same like Rahul अपना steal कर लिया है अपना spot with that performance की he's one of, he could be one of the better हाँ, hitters of the या ball in the game. Let's talk a little या bit about Vizag, Viशाखापट्टनम। सुनने में आ रहा है, मैंने पूरा वेदर नहीं देखा है, कि शायद बारिश कर सकती है। तो अगर ये ओ बारिश हाँ, करेगी तो हाँ, ये हाँ, शॉर्ट गेम हो हैदराबाद में सकता है। बारिश हो अगर रही है। हैदराबाद में बारिश हो रही है, सो अगर बारिश करेगी तो this could become a short game, and then they could play that T20 style, in which case Australian hitters और ये Indian all-rounders सारे प्ले में आ सकते हैं। हम्म, पिच का क्या लग रहा है? आई थिंक ट्रेडिशनली Vizag has been a high scoring game। मुझे आई थिंक इंडिया स्कोर्ड सम 380 ऑड सम टाइम बैक वेस्ट इंडीज के साथ, इफ आई रिमेंबर राइट, 2018 2019 हाँ। आई 2019। देखिए, अगर ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो इंडिया की ज्यादातर ओडीआई पिचेस, दे आर बैटिंग फ्रेंडली। आई मीन, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ अ 300 प्लस स्कोर इजीली। आई नो कि करेक्ट। ये मुंबई में नहीं हुआ। तो मुंबई वाज वाइजैक अ की सरप्राइज। पिच,
हाँ राइट, तो वाइजैक की पिच यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी फ्लैट. मेरी memory as soon as I hear about Vizag is MS Dhoni is on the 183. I think that was the one It's true. where he It's true. announced versus Pakistan. तो मुझे तो लगता है फ्लैट डेक होने वाला है, तो And if I remember देखते हैं. right, Kohli has. I just pulled up a stat from Cricket for here. Kohli has done very well in हम्म, Vizag. He's अच्छा, played six ओके. times. He's scored a scores of 118, 117, 99, 65, or 157. So यार यार Kohli कोहली loves का वन, Vizag. I यार think कौन सा Rohit ग्राउंड ऐसा Sharma रहे. has that connection with Vizag too. Sorry, I cut you off there. Go ahead. नो आई एम सॉरी, मैं बस बोलने वाला था कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. Very तो easy. बहुत ही कम ग्राउंड रहे होंगे, और स्पेशली इंडिया में वनडे क्रिकेट Very में. true. Very true. तो इसीलिए he's King या Kohli. We all love. Yeah. किंग कोहली या. That should be it. I think predictions. I'm saying India will win this. Even if it's a short-run game, I think India will win this pretty much. या आई That's my थिंक prediction. इंडिया. या All right. इंडिया. Let's hope our prediction this time goes right. Like last time, शायद क्या पता ऑस्ट्रेलिया bounce कर लाए. But नहीं, अगर yeah, अगर I अगर have a अगर feeling गलत या अगर अगर गलत भी हुआ तो एज क्रिकेट फैंस आई थिंक वी वुड वांट द we थर्ड would टेस्ट want the मैच टू third बी game to be enjoyable. So I think let's yeah. I mean, I want a good game of या. cricket, whatever the time, whatever the weather is. But yeah, predicting India will win this. Let's just move. I think आज काफी अच्छे matches हुए हैं. Let's just quickly talk. Um, outside India, Australia, we had cricket में I think New Zealand, Sri Lanka. केन विलियमसन ने डबल फिर शतक से ठोका. बनाया, फिर से ठोका है. Henry Nichols has joined him as another second centurion. I हम्म. believe New Zealand ended the day at 580 for 4. 120 overs में तो almost like 4.8 run rate में उन्होंने मारा है. So it was like हम्म. baseball light or baseball इस या. version बोल सकते हैं. Sri Lanka ended हम्म. the day 26 for 2. Is Kane Williamson the greatest news Kiwi batsman of this era? I mean, we all know Martin Crowe, Glenn Turner, Richard Hadley, but Ross Taylor as Kane Williamson joined that elite of the elite New Zealanders? Or is he the See, as far GOAT? as the numbers, yeah, I think as far as the numbers go, I think he has all the credentials required to be the greatest Kiwi batsman. लेकिन समवेयर अगर लोगों ने मार्टिन क्रो को खेलते हुए देखा है, और अगर अगर किसी को भी याद है द क्वालिटी ऑफ बॉलर्स दैट ही फेस, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक लास्ट 10 से 12 साल में आई थिंक एक या दो ही वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आए हैं. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक देयर आर सर्टेन बॉलर्स हु परफॉर्म वेल इन सर्टेन कंडीशंस, लेकिन ओवरऑल ज्यादा ग्रेट बॉलर्स नहीं आए. तो अगर लोगों को याद है मार्टिन क्रो की बैटिंग एंड द बॉलर्स, आई थिंक जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इफ यू आस्क वसीम अकरम who is the best batsman that he's bowled to, he doesn't say Lara or Ponting or Gilchrist. I think Gilchrist का उन्होंने एक दो बार नाम लिया है, that he kind of fears him sometimes. लेकिन his number one ranked batsman that he's bowled to is Martin Crowe. तो वसीम अकरम जैसा बॉलर जो आई थिंक कोई सी भी टीम में वो टॉप, आई मीन जब भी आप 11 बनाओगे तो वसीम अकरम का नाम रहेगा. तो Are you अगर sure वो about जस्ट that? I वैस don't know about that, but yeah, ठीक है. That's all right. आई थिंक We'll एट take that. लीस्ट, हाँ मे बी सम अदर एपिसोड फॉर श्योर, आई वुड लव टू डू दैट. तो तो हाँ मतलब ठीक है, क्रेडिबिलिटी वाइज वसीम अकरम का नाम तो काफी ऊपर है. आई मीन इट्स That's true. डिबेटेबल कि वो हाँ टॉप 11 में रहेंगे कि नहीं, लेकिन मार्टिन क्रो थोड़ा मैं ऊपर रखूंगा. लेकिन हाँ आई मीन क्रेडेंशियल्स वाइज ही I इज will राइट अप s- देयर. I will say the flip side for this argument. Kane Williamson went across the world and has done it. And आप बोल सकते हो कि ballers world class ballers नहीं हुए, but आज के जमाने में people are playing test ODIs T20s. You know that segment is all there. Different batsmen ko they have to change the gears and they change the mindset. I have to say Kane Williamson, matlab, he's brought New Zealand to the हाँ forefront. ही Martin Crowe हैज. ne, I don't remember Martin Crowe going berserk in India or in subcontinent conditions. May नहीं not be at नहीं the नहीं same नहीं, level. May not be अगर at the वही same मैं level जो, at the same time as Kane नहीं नहीं Williamson. वही, तो मैं जो वसीम अकरम और वकार यूनिस की जो बात कर रहा हूँ, आई थिंक ठीक है दैट, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज ही इज वन ऑफ द करंट लॉट्स के जो बेस्ट फोर में क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड नाउ, कि ये चारों का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, स्मिथ रूट, Fab Four.
Fab Four. Fab मॉडर्न डे Four वर्जन ऑफ में फैब फोर। फैब फोर आई थिंक लास्ट 2 साल उनका टेस्ट मैचेस में उतना अच्छा नहीं रहा था, कंसिडरिंग न्यूजीलैंड आल्सो हैज प्लेड लेसर मैचेस, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के फाइनल्स में, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अच्छा रहा था न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन हाँ, उनका टेस्ट मैचेस परफॉर्मेंस ऑफ लेटली थोड़ा ल्यूकवार्म था, लेकिन आई थिंक लास्ट 3 मैचेस में आई थिंक दिस इज हिज थर्ड कंसेक्यूटिव 100 इफ आई एम राइट। I think one came करेक्ट, versus करेक्ट। England and the last one and this one. श्रीलंका इन नॉइस। So as he has picked up the pace. So yeah. Yeah, I think by the time he finishes it, the longevity आप देखो ना, 2008 से 2009 से आए Mm. हुए हैं, 12 साल, 13 साल almost. Martin Crow's longevity was not as much as this. So I don't deny. I mean, I would put him along with Martin Crow, Richard Hadley, the previous era, the 431 of his own. I know he was. I'm talking greatest Kiwis. अगर greatest batsman की बात करेंगे, I would think he's already in that top elite of greatest of the greatest. So, but yeah, essentially Kane Williamson's double century, Nichols ने भी अपना century double दोहरा शतक बनाया. I think New Zealand is kind of winning this. I mean, I don't see Yeah, Sri अब Lanka श्रीलंका, surviving या यार ages श्रीलंका अब for this. श्रीलंका की तरह खेल रही है। आई थिंक श्रीलंका जैसा उनको खेलना चाहिए वो अब शायद खेल रही है खेल लास्ट रही है, लास्ट सो मैच में। मुझे लग रहा है कि ये हाँ 3 दिन या 4 दिन में गेम इनिंग्स खत्म हो जाएगा. लेट्स सी. हाँ, बट या आई थिंक लेट्स वेट, न्यूजीलैंड इज लेट्स वेट। आई मीन देयर आर, हाँ, ending this their या summer season very high on a high note. या Let's लेट्स quickly वेट। move. Yeah, let's quickly move to the other one, which is let's talk about your team, South Africa versus West Indies. West Indies has won this game by 48 runs. आज का गेम आई थिंक ईस्ट लंदन में हाँ। हुआ था, सेकंड ओडीआई. They were scored हम्म 335 with Shea Hope scoring I think 128, and हम्म West हम्म Indies won this by 48 runs. But हम्म। मानना पड़ेगा, टेम्बा बवुमा ने 144 मारा. बट देखिएगा, अगर आप, मैंने अभी स्कोर कोड निकाला है, साउथ अफ्रीका वेयर 184 for 2 and they and collapsed to 238 for 8. मतलब 50 रन में आपके 6 विकेट उड़ गए. दिख रहा या है कि साउथ अफ्रीका को अब वेस्ट इंडीज भी हरा रही है. नो ऑफेंस टू वेस्ट इंडीज, बट वेस्ट इंडीज इज नो लॉन्गर द same old West Indies. But what do you have to take about your own team of Africa, South Africa here? I mean, if I just have to talk from their perspective, I think some of their certain top players were not playing in this particular match. हालांकि वो भी एक रीजन नहीं हो सकता। आई थिंक South should have defeated That's them an considering the kind excuse. of start that they had. या वही मैं एक्सक्यूज ही बोलूंगा, लेकिन considering the kind of start that they had, you just said right, they 184 for 2, match was in their grasp. If you look at, they played 41 overs and they scored almost 300, 290 runs, 287. तो मतलब आपको लग रहा है कि 9 ओवर और हैं और they just have to score 50 runs. So wickets in hand, it was their match. Uh, वही तो नहीं थे. I didn't watch the entire match. I watched few bits of Babuma's innings. बस अगर मैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट फैन की तरफ से बोलूंगा तो आई थिंक बबूमा हैज बीन द शाइनिंग ग्लोरी फॉर साउथ अफ्रीका सिंस few of the matches. आई थिंक इज कम ऑफ एज। आई थिंक उन्होंने इंग्लैंड के साथ अच्छी बैटिंग की थी। आई थिंक इंग्लैंड को जो वनडे सीरीज में हराया था, ही प्लेड अ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और फिर टेस्ट मैच में एक सेंचुरी लगाई थी इन्होंने, और अब एक सेंचुरी, एंड ही इज प्लेइंग वेल। इट्स नॉट दैट कि वो 100 मार रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली 125 या ही इज 30 नॉट बॉल। गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवन. ठीक है, आप बोल सकते हो नए खिलाड़ी आए हैं, बट ठीक, इट ठीक कुड है। स्टंग. आपने घर पे हार गए, और वो भी मतलब West Indies is no longer that power hitting team of या ODIs. आई West Indies थिंक is देखिए, मैं also that जितना भी अपने transitional आप को, team. या आई मीन मैं अपने आप को जितना भी सोलेस कर लूं, लेकिन हाँ, आई थिंक साउथ अफ्रीका टीम इज नॉट द वेरी सेम साउथ अफ्रीका टीम इवन Correct, लेट्स से गो 4-5 years बैक। correct. ठीक है, You आई have, थिंक दे हैव few good players, but they are not but like yeah, the they're not the solid team old. like They're not the no, old. They're not the AB it's de going to Villiers take some of time. Yeah, time लगेगा. it's going to take some time. We'll wrap the international cricket segment here with Bangladesh versus Ireland. बांग्लादेश स्कोर 338. एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बना है, शायद शकीब अल हसन ने 93 मारा है. then there was another guy, I don't know this guy, Tawhid Hridoy scored 92 in this journey. Sakib Al Hasan ने in this journey when he scored this runs, I think 20 या 30 या जो भी स्कोर पे थे, he ended up the record books में चले गए. He's now the third person in the history of ODI cricket to have scored
7,000 runs and 300 wickets. I think it's a great achievement. The only two players who've done it before him are Sanat Jayasuriya and Shahid Afridi. So Shakib Al Hasan has reached that elite all-rounder, statistics in the record books. But they beat Ireland very comfortably. Ireland did not have any partnership. I think Dockrell was always there around. उन्होंने 45 मारा, but इबादत हुसैन ने 4 विकेट लिए and Naseem Ahmed ने 3 विकेट लिए, and it was a very comfortable victory for Bangladesh at Sylhet. So this was our first ODI there on that side. Any comments on Shakib Al Hasan and Bangladesh who win overall? आई थिंक बांग्लादेश में हराना बहुत ही डिफिकल्ट रहा. आई थिंक उनकी लास्ट 8 या 9 साल में ओनली वन टीम हैज डन इट ट्वाइस, व्हिच इज इंग्लैंड. England recently they defeated them in the ODI series. England still lost the games. It's not that England did not have. England lost the last game, I believe, the last game. लेकिन मैं अगर बस सीरीज की बात कर रहा हूँ तो which is quite an event by itself. Correct. 8 साल में only one team has done it twice, which is England. तो आप कंसिडर कर सकते हैं इंडिया हैज कम. और इंडिया आई मीन लोगों की शायद इंडिया गेम भी वीक है. हाँ, बस थोड़े दिन पहले गए थे, and then they did not win this. So and then Australia has won there. Australia did not win it. So yeah, Bangladesh is a very strong team in the subcontinent conditions. Very strong team at home. I think I think this could be Shakib Al Hasan's last World Cup. I feel if he's in, if he continues this, who knows? Bangladesh can surprise or destroy someone else's hopes of World Cup win, even if they don't. Yeah, in these. Yeah. I think in these conditions you can always, I won't call them. I don't think so. We can call it anymore an upset. They're not no such longer. A bad I think they team are. Anymore. They are not a bad team anymore. I mean, I would put them on the same base as Sri Lanka, South Africa, West Indies. अब आ गए वो top tier तो मतलब एक वो ODI टीम है जो मिनोस नहीं बोल सकते हैं आप. वो they are Bangla, the Bangla Tigers. They are Tigers at home in this aspect. Actually अगर they could do very well in World Cup. थोड़े से कंडीशंस हल्के से स्लो टाइप हुए इंडिया में, which can happen sometimes. मुझे तो कोई डाउट नहीं होगा कि मैं बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका, मे बी समटाइम्स इवन न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को वो they can easily defeat. I can they can defeat any of the top team on their day, and you have to watch out Bangladesh in the World Cup this year. They are getting good players, and if the conditions suit them, they're gonna wreck some hopes. So we'll watch out for Bangladesh. I think we'll keep an eye on them. We'll end the segment with PSL. आज PSL का final हुआ था. Lahore Qalandars versus I believe Multan Sultans, and Qalandars won by 1 run. Apparently मैंने ये हमको यह मैच नहीं आया था यूएस में, मतलब मेरे पास वो सब्सक्रिप्शन नहीं था जहाँ पे आ रहा था. Apparently the closest PSL they had in many years. Qalandar scored 200 for 6, and one of the stars of that batting was Shaheen Shah Afridi. He whacked 5 sixes in his 44 runs or 15 balls, and he came out with the ball. He took 4 wickets and he did a run out and got them, 1 run victory over them. Riley Riso scored 52 on Multan Sultan. Everyone chipped in, like 34 from Mohammad Rizwan, 20 from Tim David. Kieran Pollard scored 19. मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ करा नहीं है, but वहां पे अब्दुल्ला शफीक ने 65 रन मार के एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था. But I am told this was the repeat of last year's PSL final, and Qalandars have now defended their crown of PSL. So I know अब IPL शुरू हो रहा है. We'll end it with this segment. Is IPL better than PSL? And is PSL as good as what people say? I think ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी भूल होगी अगर वो सोचते हैं कि PSL IPL से बड़ा ब्रांड है. हालांकि मैं T20 क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, और स्पेशली लीग का, लेकिन जितना भी मैंने देखा है और PSL को मैं देखते रहा हूँ जब से वो लॉन्च हुआ है, और स्पेशली लास्ट 2 सीजन से, बिकॉज इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. इट्स अ मिथ जो पाकिस्तान सोचते हैं कि PSL इज बेटर देन IPL. इट इज IPL इज फार अवे.
far away. IPL is The best head and shoulders above shoulder. PSL or BPL. आई थिंक अगर क्वालिटी में या क्वालिटी में अगर बोलना चाहे, आई थिंक बीबीएल शायद, आई वोंट से ऑन पार, बिकॉज़ उनमें भी ऑस्ट्रेलिया के खुद के प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। लेकिन जस्ट द काइंड ऑफ पिचेस दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ बाय नेचर, इट काइंड ऑफ प्रोड्यूसेस, you know, good viewing to the spectators and the viewers who is watching on the television. Uh, तो बीबीएल है अच्छा, लेकिन आईपीएल, आई मीन एज यू सेड, आई थिंक in all the parameters it is by far the best tournament. लेकिन हाँ, पीएसएल एक दो प्लेयर्स आई थिंक द वर्ल्ड कैन लुक आउट फॉर. आई थिंक वी वर हैविंग एन ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन अबाउट इट. समी अयूब बोल के एक प्लेयर हैं, और एक मोहम्मद आरिस हु एक्चुअली प्लेड इन द T20 वर्ल्ड कप, और मैंने उनकी बैटिंग देखी थी साउथ अफ्रीका के साथ. बसित आंद्रिक नोर्कियास एंड रबाडास. बहुत ही कम शॉर्ट ड्यूरेशन इनिंग्स थी, लेकिन ही कॉट माय आई, और आई थिंक लोग इनका नाम जरूर सुनेंगे. तो दो तीन प्लेयर्स हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे उनका जो प्रोडक्शन, कमेंटेटर्स, पता नहीं, मुझे I पीएसएल agree with डजंट you. रियली अपील मी. PSL doesn't appeal me. Our team hai. They get tier B world class international cricketers. They don't get the top tier. All the top players, the best players in the world, go to IPL. The stars of the world cricket go to IPL. जिनको थोड़ा पैसे अच्छे मिलते हैं, let's face it, उनको जो या पैसे अच्छे कमाने हैं, playing multiple leagues, they all go to PSL there. Nothing wrong with it. पैसे, it's you have to make money. But it's not elite players. India के players नहीं जाते हैं. You don't see any elite players going into PSL. नहीं. Who are we kidding? PSL is nowhere near IPL. IPL is the best. IPL is like Premier League of football. Like in English Premier League, if you look at an international football, IPL is like Premier League. It's where the best players who want to come. It's got the league. It's the most viewed cricket league in the world. These are the players who want to showcase the world, and the audience, the sponsors, the commentary, as you said, the whole package, production values, the whole thing. Unfortunately, PSL is nowhere near there. And Sure, they may get some of good players here and there. ऐसा नहीं है कि होता है. इस साल I think हालांकि they had a lot of those 200 plus runs because pitches भी ये नहीं है. But वो quality overall नहीं है. तो हाँ, तो no वही एक और comparison. चीज है. या एक और चीज जो पाकिस्तान के प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स जो बोलते हैं कि पीएसएल की बॉलिंग इज सुपीरियर टू आईपीएल, आई थिंक वो एक भ्रम है, और ये भ्रम इस पीएसएल में टूट गया है. अगर आप देखेंगे, आई थिंक हर एक मैच में क्लोज Every 190 match प्लस हुआ है. 290 plus totals हुआ. अगर और आपके बॉलर्स इतने अच्छे हैं, हाँ, तो भाई exactly. इतने सारे मैचेस इतने मैचेस में क्यों क्यों हो हो रहे रहे हैं? हैं? और तो और you get one or two these stars. ऐसा नहीं है कि एक दो players हैं. But if you look at in IPL में जो इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट को जो टैलेंट मिलता है, यस, वन वे आई विल क्रिटिसाइज आईपीएल फॉर डिस्ट्रॉइंग आवर टेस्ट क्रिकेटिंग ट्रेडिशंस एंड वनडे क्रिकेटिंग ट्रेडिशंस की पेशेंस चली गई है. पीपल वांट टू जस्ट स्ट्रोक मेकिंग. ऑन अदर हैंड, द नंबर ऑफ टैलेंट्स वी हैव अनकवर्ड थ्रू आईपीएल, आई डोंट थिंक दे वुड हैव गॉटन दिस एबिलिटी इफ आईपीएल वाजंट देयर. लाइक सूर्य कुमार यादव वुड नॉट हैव बीन इन द वर्ल्ड वाइड फोरफ्रंट अगर वो मुंबई इंडियंस के साथ ऐसा परफॉर्मेंस on an overall, over their career करा हुआ है. Ishan Kishan is another good example who used IPL as a springboard now. I mean, people now consider IPL as a springboard to get themselves into the world standard in terms of world view. And some of the bowling we have seen, Mohammad Siraj and some of the other bowlers we have gone through, मोर और लेस हमने देखा है कि इन लोगों ने आईपीएल में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है. पीपल नो देम, पीपल हैव हर्ड अबाउट देम एंड देन दे हैव मेड या देम मार्क. एंड if they are very good across all format cricketer जो बोलते हैं, who can play T20 ODIs and test cricket, if they are very good, they have the ability to showcase that performance who they are. They get that ability to try and get into the Indian team. Getting into Indian team is a very tough ask. It's most competitive cricket team to get या into. And so if it uncovers these domestic talent, अब तो दो और टीम बढ़ गई हैं. Like Gujarat and Lucknow has come into the play. So IPL has changed Indian cricket both in a good and a bad way. There are good aspects about it. There are bad aspects about it. Crowd loves IPL. I mean, you could see the amount of crowd we get in
अब PSL का देखोगे, it's nowhere near. So I mean, yeah, I wanted to talk PSL because I know it's been happening for so long. अभी इस time पे हो रहा था, but yeah, we were not that big fan. We're not that big fans of PSL anyway. But we wanted to cover just the finals which just happened. ऐसा Yeah. लगा कि that whole barbarism versus Kohli and all that, but can it come any day? I think, yeah, Royal Challengers Bangalore will beat Babar's team there right away. So, but yeah, essentially that is it. We want to end here. Thank you, everyone. Keep watching our channel. We'll be doing IPL content very, very soon after this ODI series is over. Please hit that like button. Please look at our previous videos as well, and please subscribe to the channel. That's all from us. Thank you, and we'll talk again later. Bye bye. Thank you. Bye bye.